Hello everyone, welcome to Apply Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express. So I'll be covering the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing that news with some important information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 7th of May. The first topic is US and European Union backs IP right waivers for the COVID vaccine. Second, Supreme Court declined Election Commission plea on media's report. Third, pandemic may hit energy demand in first quarter. The second last topic, Supreme Court seeks preparation plan for the third COVID-19 wave from the central government. And the last is holistic and national strategy for COVID management. So most of the news that we are discussing, it's somewhere or in any way they are related to COVID and pandemic only. Apart from this, at the end of this session, we'll have some MCQs question. These questions would be based on current affairs, their concept, so that it can help you in the upcoming prelims examination. So this is all about the topic. Now get started with the news. And before we proceed, if you have not subscribed to our channel, do subscribe on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. Now starting with the topic, the first is EU and European Union and United States, they have backed the IP right waivers for the COVID-19 vaccines, right? So this is something which was required before actually the decision has been taken. ये और पहले decision आनी चाहिए थी. But nevertheless, it has already been decided जो IP rights के जो waivers हैं वो मिलेंगे और सारे pharmaceuticals company को, and this is definitely going to help in the mass productions of the vaccine. So we'll understand how this will actually work, इसके practical implications क्या होंगे, and how the production in India would also be going to be benefited from this. So important for your general studies paper 2, effects of policies and politics of developing and developed countries. So United States administration ने recently announced किया है they would be waiving the TRIPS, the trade related aspects of intellectual property rights जो हैं COVID-19 vaccine manufacturing के लिए इसमें waive off दी जाएगी. So decision जो है this may lead to speeding up the inoculations of the drive vaccine worldwide. So खास करके जो overall productions है vaccine की, this would increase globally, not only for specific country but globally it will help. Subsequently, यूरोपियन यूनियन ने कहा है दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू डिस्कस द वेवर्स, और ये चाहते हैं कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उसमें दिस इज द राइट टाइम दैट वी शुड बी वेविंग ऑफ, लाइक आफ्टर अपोजिंग द प्रपोजल मेड बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका लास्ट ईयर. सो इन्होंने पहले इसको मना किया था, बट फाइनली दे आर नाउ इन द कंडीशन. वी हैव सीन द पोजिशन ऑफ द एंटायर ग्लोब, द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द पैंडमिक. सो दिस इज द राइट डिसीजन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम दैट द वेवर हैज बीन गिवन अंडर द ट्रिप्स. सो फाइनल जो वेवर्स है दैट कैन बी ओनली इन्फोर्स्ड जब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने मेंबर कंट्रीज हैं, 164 जो मेंबर कंट्रीज हैं, they would have to give the final assent to WTO to proceed with the waivers of the TRIPS, right? So this is how the actual mechanism is going to work, and once passed, this would be giving a boom to the overall productions of the vaccine of the COVID-19. Now advantages की अगर बात करें क्या क्या waivers होगी, specifically talking about the pharmaceutical firms. So the waiver on the IP protection, जो intellectual properties right है, उसके जो protection, that would mean the pharmaceutical firms and vaccine makers across the world to learn how to make the vaccine without fear. क्योंकि अभी तक अगर IP जो rules हैं उनके मुताबिक the company if they are doing anything with their जो भी इंग्रेडिएंट है या फिर जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है, तो दूसरी कंपनी उनको लॉ शूट कर सकती थी विथ द ओरिजिनल कंपनीज. अगर वो ओरिजिनल कंपनी के कोई भी उस चीज़ को अगर लेते हैं, कोई थ्योरीज लेते हैं या फिर कोई मैकेनिज्म को लेते हैं, तो कंपनी एलिजिबल है लॉ शूट करने के लिए अंडर द IP प्रोटेक्शंस. बट वेव ऑफ के बाद कुछ लिमिटेड कंपनीज को टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी एंड दे वुड बी एबल टू डू दैट. जो मैकेनिज्म है चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए हो, एवरी कंपनीज वुड बी बेनिफिटिंग, और जो लॉ शूट्स की जो क्लोजेज हैं वो अभी के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. This is the first foremost advantages. The second जो IP waivers है that would speed up the productions. खास करके अगर बात करें जो emergency use authorizations वैक्सीन की गई है, EUA is a term that we used. तो कुछ important vaccines developing companies है like Pfizer, Moderna, AstraZeneca is also there, जो कि already इंडिया में Serum Institute of India इसकी कोविशील्ड वैक्सीन बना रही है. Novavax
Johnson and Johnson and Bharat Biotech, right? So they would be able to produce X number of वैक्सीन, द मास नंबर ऑफ वैक्सीन दे वुड बी एबल टू प्रोड्यूस, और ये सारे वैक्सीन को ये मिडिल इनकम कंट्रीज में सेल कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे. सो मोर प्रोडक्शन इज कंप्लीटली कंसंट्रेटेड ऑन द हाई इनकम कंट्रीज. सो इंडिया में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज किया है कि जिन कंट्री में खास करके यूएस, यूके एंड इवन द WHO की जहाँ से ऑथोराइजेशन मिली है, उन सारे कंपनीज को इंडिया में वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा. दिस टू इंश्योर कि जो मास प्रोडक्शन है वैक्सीन की वो हो सके. वी नो that as of now only 12.6% of the people have been vaccinated with single dose, और अगर डबल डोज की बात करें तो only a small proportion of 2% of the people for time being have been vaccinated of the total population. So the vaccination drive in India is very slow. We need to pace the vaccination drive. To pace the vaccination drive, we definitely need mass amount of vaccine, and that is only possible when the number of players is going to increase. So this decision would definitely help the pharmaceutical companies. So if you're writing in mains examination, you have to show an optimistic approach so that you get a good marks while writing the answers. Now EU और यूरोपियन यूनियन के recommendations की अगर बात करें, so both countries has originally asked the TRIP Council to recommend as early as possible ASAP के जो methodology है उन पे काम करने के लिए बोला गया है कि आप जितनी जल्दी हो सके ये वेव ऑफ को implement करिए, ताकि जितनी सारी कंपनीज है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं they would be benefited and they would be having the mass production of the vaccines. So the US and European Union are the major countries that have opposed the proposal. Initially I have told you ये दोनों कंट्रीज थे जिन्होंने इस तरह के प्रपोजल को अपोज किया था, बट ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इट वाज वेरी एसेंशियल इस तरह के डिसीजन लिए गए. Now the European Union is also ready to discuss any proposals to address the crisis. ये एक इफेक्टिव तरीका है, प्रैग्मेटिक तरीका है जिस तरीके से ये डिसीजन ली गई है. दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दैट इज ऑन गोइंग इन द वर्ल्ड, और ये ह्यूमैनिटी के लिए ये डिसीजन है, नॉट ओनली टू मेक प्रॉफिट, राइट. सो दिस इज एन इफेक्टिव एंड प्रैग्मेटिक वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक. Now, India have definitely welcomed this decision. The Ministry of Commerce and Industries, they have welcomed the decision of US government of supporting this initiative, जिसको 120 कंट्रीज ने ज्वाइन किया एक अफोर्डेबल वैक्सीन बनाने के लिए. जब IP के रिस्ट्रिक्शन हटेंगे तो बहुत कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो हाई हो जाएगी. So this is hopeful how that consequences is going to base the wave of an approval quickly at WTO. So final call has to come from WTO, and once it is approved, we can see the results within coming 2 to 3 months. So the waiver is an important step for enabling the rapid scale up of mass manufacturing. Timely availability of vaccines भी होगी, उसके साथ साथ जो affordability है, जो competitiveness है मार्केट में प्राइस को लेकर के, जो वैक्सीन की प्राइस है, that is also going to decrease because of the competition in the market. And essential medical products के लिए at this point of time it is very essential that all the rules and regulations should be waived off. So this is how India's have welcomed this decision. Now coming to the second news, Supreme Court declined the Election Commission play on media's report. So we have seen that the news arising 26th of April, जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के खास करके जितने भी इलेक्शंस कमीशंस के ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ मर्डर की चार्जेस की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए. ओरली दे हैव गिवन, दे हैव नॉट गिवन एनी जजमेंट. तो ओरल ऑब्जर्वेशन मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पे एक प्ली फाइल की कि उनकी रिपोर्ट्स को मीडिया हाउसेस में रिपोर्ट ना किया जाए. So Supreme Court has given a very important part of this. We'll discuss what is there. So it's important for your general studies, structure, organization and functions of judiciary. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे हैव रिजेक्टेड द प्ली ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड दे हैव सेड कि वी कैन नॉट रिस्ट्रेन मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट ऑन द पोल पैनल. हम उनको मना नहीं करेंगे. जो भी मद्रास कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन पे मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर सकते हैं. दिस इज योर फॉल्ट दैट यू वर नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन during the pandemic why the election was being conducted, right? This has resulted in the second wave, and further we are witnessing we are on the assumption that third wave can also arise in India. The Supreme Court has categorically said that we are not going to restrain any media houses from reporting this observation of the Madras High Court.
सो अ स्ट्रिक्ट जजमेंट, अ स्ट्रिक्ट नोट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिस इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और आर्टिकल 19(1)(a) में ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है कि हर इंडिविजुअल को राइट है अपनी बात रखने की। सो वी कैन नॉट आस्क द मीडिया हाउसेस टू रिस्ट्रेन फ्रॉम रिपोर्टिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशंस, राइट। सो आर्टिकल 19 बहुत इस बार न्यूज़ में है। आप इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे देख लें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। अ वेरी पॉसिबल क्वेश्चन कैन बी देयर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Now, Madras High Court ने एक्चुअल में क्या कहा था? On 26th of April they have given their remarks, right? Date is not important, I'm just trying to make you recall. तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशंस हैं उस पे खास करके जो मद्रास के डिवीजन बेंच है, दे हैव सेड कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन कमीशंस के उन पे मर्डर के चार्जेस होने चाहिए, बिकॉज जो तमिलनाडु असेंबली में जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुई है, दैट हैज रिजल्टेड इन द सर्ज ऑफ कोविड-19 केसेस इन द तमिलनाडु स्टेट। And the judges have marked the EC solely responsible for the कोविड सर्ज। सो बहुत ही हार्श ओरल नोट में और जजमेंट दी गई है सुप्रीम खास करके मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। दिस इज एन ओरल ऑब्जर्वेशन विच मद्रास हाई कोर्ट हैज गिवन देयर रिमार्क्स। दिस इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, बट डेफिनेटली जब एक हाई कोर्ट इस तरह के रिमार्क देती है तो जो हमारी फंक्शनिंग है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट जो ड्यूटी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे भी काफ़ी सवाल उठे हैं। व्हाट इज योर व्यू? यू कैन शेयर योर व्यू इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। Now, special leave petitions के जो provisions है, according to them, the election commission has appealed the Supreme Court. So, special leave petitions होती क्या है? We'll discuss that as well. तो जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे, दे हैव अपील्ड द सुप्रीम कोर्ट वाया स्पेशल लीव पिटिशन। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेशल लीव पिटिशंस। तो जो ओरल कमेंट्स हैं उनके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस थे उनसे रिपोर्टिंग के लिए मना की गई। और सुप्रीम कोर्ट के खास करके जो चीफ इलेक्शन कमीशंस हैं उन्होंने अर्ज किया था डायरेक्टली कि पुलिस किसी भी तरह से कोई भी केसेस ना रिपोर्ट करे इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स पे। So this is what the election commission has actually submitted to the Supreme Court. Now under Article 136 of the Constitution, special leave की provisions है Supreme Court में, और ये 136 है क्या, आप इसको समझ लें, because this is very factual and important for your prelims as well as for the mains examination, right? So in the 136 it says that the Supreme Court has a power in its discretion to grant special leave टू अपील एनी जजमेंट। कोई डिग्री है या कोई डिटर्मिनेशन है, कोई सेंटेंस है, उस चीज़ को पास करने से पहले किसी भी ट्राइब्यूनल ने अगर पास किया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस पे दे कैन रिस्ट्रेन इट, दे कैन पॉज दैट पर्टिकुलर जजमेंट। And notwithstanding the clauses, the Supreme Court shall apply to any judgment that is discrimination, sentence or passed by the court. ट्राइब्यूनल में जिसने पास की वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस पे भी ये एप्लीकेबल है, राइट। सो यू गो टू द इंडियन पॉलिटी बुक बाय एम लक्ष्मीकांत, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो मिल जाएंगे। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो गूगल सर्च करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू गेट एम्पल इंफॉर्मेशन बिफोर यू अपेयर द एक्चुअल एग्जामिनेशंस। Now, pandemic may hit energy demand in the first quarters. A report coming that the demand for the energy sector is going to deteriorate in the first quarter, and this is important for the General Studies paper 3, infrastructure, energy, port, roads, airport, and etc. So, इंडिया की जो रेटिंग एजेंसी है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इट इज कॉल्ड एज IND-RA, दे हैव रिसेंटली रिलीज्ड अ न्यू डाइजेस्ट जहाँ पे बताई गई है कि जो इंडिया की पावर सेक्टर है दैट इज गोइंग टू विटनेस अ डाउनफॉल इन द सेकेंड क्वार्टर ऑल्सो। So according to the rating agency, due to the restriction following in the second wave of the COVID-19, this could severely impact the energy demand, जो कि रिकवरी हुई थी ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर में, बट after the pockets lockdowns which is there in all the major states like Delhi, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, तो बहुत सारे स्टेट्स में पॉकेट्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है फ्रॉम 25 मार्च ऑनवर्ड्स फ्रॉम द सेकेंड वेव दैट इज स्टार्टिंग इन इंडिया। तो उसके बाद आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3, वी कैन सी देयर कुड बी द डाउनफॉल इन द ओवरऑल पावर सेक्टर ग्रोथ। नाउ हाइलाइट्स क्या क्या थे इस रिपोर्ट के? द रिपोर्ट हाइलाइट्स द ट्रेंड ऑफ द पावर सेक्टर, जो कि फोकस करती है उसके कैपेसिटी एडिशंस पे, जनरेशंस, ट्रांसमिशंस, मर्चेंट पावर और डेफिसिट को लेकर के। So the regulatory changes in the recent rating action has been taken by the IND-RA, जो इंडिया रेटिंग एजेंसी, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया।
Now, the Indian rating agency has said कि जो lockdown है that is going to increase the COVID-19 cases and definitely जिस तरह से cases बढ़ रही है it would impact the energy demand in April to June 2020. So they have predicted a 1 year duration in which we can see the consequences. Overall, जो energy demand है that is expected to be higher because the low base effect of the countries under the strict lockdown in the same period. ना शॉर्ट टर्म पावर प्राइसेस की अगर बात करें जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में कंटिन्यूड है, सो वी हैव सीन द इम्प्रूवमेंट ऑफ 4.07 पर यूनिट कंपेयर टू लास्ट ईयर 2.46 जो थी, बट एवरेज अगर आप मंथली देखोगे 2021 की, सो दिस वाज 3.7%, सो दिस इज अगेन बिलो 4.07, राइट. So some improvement was seen before like March 2021 के before में जो thermal powers थी उसमें load factor में increase देखी गई, that was 66.5% in March 2021 from 51.1% in a year और 63.3% in February. So this is month wise. You don't have to remember the data percentage, आप बस trend समझ ले कहाँ पे increase हो रही है और कहाँ decrease हो रही है. Now despite the onset of summer, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है इन द मेजर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट कुड ऑल्सो इम्पैक्ट द इंडस्ट्रियल सेगमेंट एंड अफेक्टिंग द PLF, राइट. सो जितने भी PLF हैं जो प्लांट लोड फैक्टर्स हैं दे वुड बी डेफिनेटली इम्पैक्टेड, तो जो ओवरऑल प्रोडक्शंस हैं वहाँ भी चीज़ें डिक्रीज होंगी. नाउ अगेन द न्यूज़ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज सीक द प्रिपेयर्डनेस प्लान फॉर द COVID-19 वेव. सो after the failure of the government, I personally feel that the central government has failed to contain the second wave. That is the reason the Supreme Court is intervening, right? And this is the only organization, the only body in India that regulates the government and gives the last discretion that what actually need to be done. तो बहुत ही अच्छी judiciary ने proactive role ली है, and a proactive role in the judiciary can also be a question in the mains examination, right? तो structure, organization and functions of judiciaries. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि आपकी क्या प्रिपरेशन प्लान होगी इफ़ देयर इज एनी थर्ड वेव दैट इज गोइंग टू बी देयर इन इंडिया, बिकॉज जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि द थर्ड वेव ऑफ द कोरोना वायरस इज इनहेविटेबल, दैट वी कैन नॉट इग्नोर दैट, राइट. सो इफ द ऑफिशियल from the saying that this is going to happen, then what is your preparation plan? This is what the Supreme Court has asked from the central government, and they have also specifically asked about the distribution of oxygen across the country, because we have seen there was a shortfall of the oxygen in state like Delhi. This is a national capital where the annual requirement for daily basis was 700 metric ton, but they were only getting 400 or 485 metric ton, because of which the chief minister have several times appealed the Supreme Court and even the Delhi High Court and the central government to increase the oxygen allocations, the liquid oxygen allocations. So they have definitely taken a note कि अब ऑक्सीजन के जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे if third wave is going to be there in India. Now observations क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू डिराइव अ फॉर्मूला where the distribution of medical oxygen in the scientific manner can be done, और जो थर्ड स्टेज ऑफ पेंडेमिक है, if it is enter into the third stage, what is your preparation plan, what is your master plan to overcome that, right? And court has asked that rough and ready formula should be devised presently in the oxygen demand, which is getting tough for the people. Basically the non-availability of oxygen is a great cause for concern. मिनिमम फॉल्ट प्रॉन फार्मूला की बात की गई है फॉर ऑक्सीजन सप्लाई एंड एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द नीड ऑफ द आवर. ऑलमोस्ट 1.5 जो डॉक्टर्स हैं, नीट के जितने भी फाइनल ईयर के डॉक्टर्स हैं, they are waiting for their final examination, after which they would be awarded with the MBBS degree. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप उनको 5,000 रुपये देंगे तो कोई भी आपके पास काम करने के लिए नहीं आएगा. So no, definitely a doctor, being a doctor, it costs a lot. The fees of a doctor in India is none less than 17 lakh rupees. If you go in private hospital, private institution, it costs none less than 30 to 35 lakh rupees. Even it costs 45 lakh rupees. So people who invested this much money to study the MBBS course, you're just providing them 5,000 rupees monthly on a basis to work for a situation where we are witnessing a huge shortfall of the doctors. So this is something which Supreme Court has strictly asked the central government कि इस तरह की अगर आप डॉक्टर्स चाहते हैं on a 5,000 rupees, this is something they are not going to work for you, right?
Now, this is still rudimentary healthcare infrastructure where rural area in India can जिस तरह से जो हमारी खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, एम्यूनिटीज़ की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, एवरीथिंग हैव अ स्कार्सिटी. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली. they need to have a holistic plan to overcome the problem and use the resources that is available with the government of India. Now, suggestions भी दिए गए हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. They have said that the center can adopt a pan-India plan to prepare with the third coronavirus pandemic, and it has asked the government to create a buffer stock to prevent the pandemic among the public. Either it is a strict lockdown, the Supreme Court has not suggested about the lockdown, but they have just asked the government to ensure how they are going to contain this and what is their master plan. And even the court has noted कि जो children हैं उनको भी vaccination की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, because it is being anticipated if the third wave continue, this would definitely impact the children, right? तो first wave में हमने देखा कि old age के जो लोग थे उनको problem हुई. On the second wave we have seen the young people, they have severely impacted, right? जो young people थे, जो young population थी, they were severely impacted. Now the third, it is being seen कि जो adolescents हैं, जो child है, वो उनको बहुत ज़्यादा impact करेगी. So they have asked the vaccination plan for the children also. Oxygen audit, that is a need for the hour and that should be done. Incentivizing the young doctors and nurses, that could be the augmenting and fatigue healthcare professionals. उसके अलावा the focus should be there in COVID management and rural area as well, because we have seen disproportionate level of amenities and services provided in rural and urban areas. So this is a time जहाँ पे rural area पे भी focus करने की ज़रूरत है. So suggestions coming from Supreme Court, these suggestions you can directly write in your mains examination. अगर आप way forward लिख रहे हैं तो आप इस तरह की चीज़ों के साथ conclude कर सकते हैं. Now, holistic and national strategy for COVID-19 management. This is something which is again very important, and this is written by Pratap Bhanu Mehta. He talks about how the government need to intervene and government policies and intervention should be there so that there could be a national strategy for the COVID management. And via his editorial, he says the Prime Minister has completely failed to contain the COVID-19. Now, COVID-19 has impacted the entire nation. It has impacted the entire world. It has disrupted the life, economies, and societies. Many people have lost their life. Many people have lost their job. Many people have migrated from one place to another place in search of job, and they are finally way back to their home, earning with nothing. So the pandemic has significantly redefined the humanitarian emergency. एक पैराडिम चेंज जो होनी चाहिए जो पेंडेमिक मैनेजमेंट के लिए, उसमें गवर्नमेंट बहुत ही बुरी तरह से फेल हुई है. दिस इज व्हाट ही हैज़ टू कोट, एंड ही सेड दैट इट इज़ आवर पॉलिसी एंड मैनेजमेंट फेल्योर दैट कंटिन्यूड ओवर द नेक्स्ट मंथ. अगर ये इसी तरह से फेल्योर चलते रही तो जो डिवास्टिकेशंस होगी, जो ह्यूमन क्राइसिस आएगी, उसको मेज़र करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा. सो दिस इज़ अ टाइम वेयर गवर्नमेंट नीड टू एक्ट. Definitely they need to have all the resources that is available, all the brain that is available, so that they can contain this virus and they can have a master plan. Now, incompetency with the central government. In this editorial, it has been criticized that central government ने खास करके जिस तरह से जो competency होनी चाहिए थी central government की leadership की, prime minister की specifically here focus on prime minister, that his leadership has failed to overcome this problem. और ये जिस तरह से political hurt है, ये national election अभी भी 3 साल दूर है. The election is going to be held on 2024. So we cannot change the government at this point of time, right? An immediate change in the government is even not possible. So we can see the intensity. The people are in a condition that they want to change the government, right? They don't want this government to continue, right? And on the flip side, the central government must recognize कि जो कोविड के फाइट है, that cannot be done alone. यहाँ पे हर एक political parties, whether it is your oppositions or any other parties, you have to seek their advice and accordingly we have to work in a coordination, right? Now, corrective measures कुछ suggest किए गए हैं, कुछ corrective measures and way forward to overcome this problem. This has been suggested by the editor in this editorial.
So first is the creation of national action plan for the next 2 to 3 years. This is not only 1 year that we need to focus. If any third wave continued or if the fourth wave is there, we need to have a master plan for at least 3 years down the line so that we can control it, right? एक tangible, realistic targets की जरूरत है vaccination procurement में, and even the vaccination in India is too slow, right? जो targets हैं उस हिसाब से जो इंडिया की vaccination है वो काफी ज़्यादा slow है. And the plan must be made and owned by the state chief ministers. Already you have seen many chief ministers have been complaining that prime minister is not understanding their problem or the availability of vaccines की वो shortfall है. Even recently the chief minister of Jharkhand has said that the prime minister has not listened their concern, and they were only more concerned how the preventive measure is being taken. So अभी जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाए, वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सो एट दिस टाइम इट इज इंपॉर्टेंट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट, सेंटर एंड द यूनियन टेरिटरीज. So second is the recognition of the short and medium run. There would be scarcity that is going to be there in the rations. So many poor people would definitely face the problem of rationing. Government ने इसको बढ़ाया है अभी फिलहाल 3 months के लिए, but that need to be increased. और जो कैश ट्रांसफर है वो भी होने की जरूरत है so that people who are not earning they can get a fair amount. You can see in Delhi the government has announced that for all the people who have worked for auto rickshaws and other people, they would be getting 5,000 rupees as a cash transfer to their bank account. Right? So this is a thing. Rationing is something which is very important so that no people die as of hunger. Third is the activation of parliamentary select committee. जो पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी होती है, PSC जो होती है, वो बहुत ही पावरफुल बॉडी होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं दे रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. सो यहाँ पे किसी एक पार्टीज को फेवर नहीं किया जाता, दे वर्क ऑन अकाउंटेबिलिटी. तो इंडिया में अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए this is the time that we need to activate the parliamentary select committees, right? And allowing the parliamentary select committee to ask ICMR why the data was not shared, why the ICMR is hiding some of the data. So accountability, we need to have a strict policy at this point of time. Fourth, for the time being, depoliticize that bureaucracy. This is the time that we need to give free hand to the bureaucracy, that they are answerable to the chief minister and even to parliament. They are actually not answerable to them, but ये जरूरी है कि जो अपने वो masters है, political masters like chief ministers there, prime ministers there, the nodal ministries are there, so they could help accountable, and bureaucrat should be given the right so that they could implement the policy. So initiative जरूरी है temporary reconciliations के लिए, where it has to be come from the prime minister, and this can be used as an opportunity to do the right thing. So the prime minister, which has created an impression in the country that he has completely failed to contain this virus, now this is the time need to some corrective measures so that we can overcome this problem, and this decision has to be taken at very earliest. And this is the need of the hour that Prime Minister has to take a call and overcome the situation that India is facing. Now moving to the MCQs question of the day. The first question is regarding the new umbrella entities for the retail payments. This was there in the news. So you have to tell me which among the following is correct. Only those entities that are owned and controlled by Indian citizens with at least 3 years of experience of the payment in the promoters of NUEs. Right? And no foreign investment is allowed in NUs in the existing guideline, right? So RBI has given the guideline. This is something which is very important for your examination. If you know, you have to just write your answer in the comment section. And if you want me to give you the correct option, just let me know. From next video onwards, we'll be continuing with the answer. Or what I can do, I can just share the correct answer in your reply, right? Second, consider the statement with regards to electoral bond. All nationalized in India authorized to issue the in-cash bond, which can be availed by 15 days from the date of issuance, and these bonds are remandable in designated account of the registered political parties. So which among the following is correct? A, B, C or D? You have to write that in the comment section down below. So do participate, write your answer in the comment section. If you have any other concern, you can let us know, and you can also get to our Fulllength test supplemented by 3 CSAT tests. This would cost you 1499, an affordable price where you can practice a lot more question, and I have provided a link in the description section where you can directly buy this course, right? So if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe.
Thank you so much.